if you want to chat, you can use chat box. Annotating is not allowed. The assessment link will be shared just after the end of the session. So no one will ask for attendance link during the session. Thank you, ma'am. Okay, thank you so much. Thank you so much. A very warm good afternoon to one and all present here. It is my extreme privilege to be here with all of you on to one more session with the Muzaffarpur Sahodaya School Complex. And like each time, we shall begin with a very short prayer. Please allow me to share my screen and we shall begin. Optimize sound. सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 So I was wondering, why people in the Sahodaya would also be by now thinking कि हर बार जब भी हम मिलते हैं यही एक प्रेयर मैक्सिमम क्यों बजती है. तो आज मैं आप लोगों के साथ इस प्रेयर का अनुवाद शेयर करूंगी. May the blessed God protect both my teacher and me. May he nourish us both together. May we both work together with full vigor. May our study enlighten us both. May there never be any ill will between us. May peace prevail. So, जैसे ही हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के साथ से, our trainings are progressing to the extent of taking the courage and the brave step of moving on with new topics to be here in front of you, looking for a lot more interaction from all of you. So let me reshare my screen. And we shall immediately begin. Before beginning with the session, it is our immense pleasure to welcome on board Shri Taran Kumar Sir, Deputy Secretary and Head CBSE Center of Excellence, Patna. He's virtually remotely present with us and his blessings always will stay with us. Sir, if you're there, please do unmute. We'd love to hear from you.
but I believe he may join a little later. So with this, we shall proceed. I hope the session is being recorded. I don't see the recording on. Yes, ma'am. Okay, thank you. So that's your resource person, facilitator and host, master trainer and resource person for CBSE, PGT, HOD Social Science and STNC, GOPI BIRLA Memorial School, Mumbai. And our topic that we've chosen today has been making stars with smart goals. And setting smart goals कोई खाने का खेल नहीं है, इसमें बहुत सारा दिमाग लगता है और एक टेक्निकलिटी है जिससे आप गोल स्मार्ट बना सकते हो. So I will share my Padlet link and I'd like you to use my Padlet link and set a smart goal for your school on my Padlet. Right, so let me just share the link. I'll put the link in the chat box. You will go to the Padlet. The question is, set a smart goal for your school. Do you know how to write on the Padlet? Below the question, you will see a plus sign, or anywhere on your screen, you will see a plus sign. You click on the plus sign and you will be able to write. So I do see people writing. Don't forget to write your name. Some 5-6 people are writing. So somebody just says right, somebody says vision. You are setting a smart goal. We are devoted to make a complete citizen. अपना नाम लिखना ना भूले. So we are devoted to make complete citizens, to reach my school and the best communicative school in my city, Muzaffarpur, Shashi Bhushan. So Satyapriya ji only says correct. I'll share my Padlet screen and you will automatically know लोग क्या लिख रहे हैं.
We are devoted to make complete citizens. Bhola Prasad Mishra ji, St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Khyati, Bangara. Specific, Dipti Kumari. We are asking you to write a SMART goal. And I can see close to 10 people still writing on the Padlet. So I will keep the Padlet link open. Please feel free to add on to the setting up of SMART goals while I proceed with the topic. So what are SMART goals? ये SMART goal का मतलब क्या बनता है? चैट बॉक्स खुला है आपके लिए, चैट बॉक्स में लिखते जाइए स्मार्ट गोल क्या है. They are specific, measurable, attainable, relevant या result oriented, time bound. Specific, measurable, attainable, relevant and time bound goals. So those of you who got it right, congratulations to you. आपके लिए तालियां. बाकियों के लिए समझने की बात है कि स्मार्ट गोल्स नाम की चीज़ क्या है. हम तो कोई भी गोल अपने स्कूल के लिए बनाना चाहते हैं, पर स्मार्ट क्यों? एक तो गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, बिल्कुल समझा हुआ, सुलझा हुआ, मेजरेबल विथ स्पेसिफिक क्राइटेरिया, परफेक्ट, कि हम उसको कैसे अटेन करेंगे. अटेनेबल, ऐसा ना हो कि हम बोल दें कि 500 आदमी इस चीज को कर पाएंगे. रेलेवेंट, रिजल्ट ओरिएंटेड, बिल्कुल रेलेवेंट होना चाहिए और टाइम में बंधा हुआ होना चाहिए कि 1 साल में या 2 महीने में हम ये करके दिखाएंगे. तो स्मार्ट गोल्स कि जब बात करते हैं तो ये इतने से टेबल से या चार्ट से हम देख सकते हैं कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड होते हैं हमारे स्मार्ट गोल्स. So there's a video on Regardless smart if it is goals. professional or personal, we all struggle sometimes to achieve our goals. Many times our struggle is not because of a lack of effort, but rather how our goals have been structured. Anytime you set a goal, if you find yourself struggling while working towards a goal, keep in mind the word SMART. SMART is an acronym that can be used to help evaluate and add structure to your goals. SMART stands for specific, measurable, actionable, relevant, and time-bound. SMART begins with asking yourself the degree to which a goal is specific. This is arguably the most important part of establishing or evaluating a goal. The less specific a goal, the more difficult it is to determine how long the goal should take to complete or how to measure success. Consider the difference between a goal to get healthy versus the goal to lose weight versus the goal to lose 10 pounds. The goal to get healthy is much less specific than a goal to lose 10 pounds. The next question to ask, how is the goal measured? What determines success? Some goals may be best measured by a simple yes or no, such as the goal of climbing to the top of a mountain, while other goals are better measured by using metrics such as the goal to lose 10 pounds. The key to measurement is making sure that in whatever way the goal is measured, it accurately reflects success. For instance, if you do not have access to a scale, then measuring weight loss will be difficult and less accurate. An alternative measure may be to track how many inches you have lost around the waist. But to what extent does this accurately reflect the goal? Without access to a reliable way of measuring weight, we may want to consider buying a scale or restructuring our goal. Actionable is not asking yes or no, but how will the goal be achieved? What is our action plan? Do we have the resources and capabilities required to achieve success? If not, what are we lacking? Well-designed goals provide clarity of action.
If the actions required to achieve a goal are unclear, or there are a large number of actions that need to be taken, we should consider breaking down the main goal into manageable, actionable sub-goals. In isolation, any single goal is relevant, but in life we most often are in the process of pursuing multiple goals. A common issue we face is having too many goals at the same time or pursuing the wrong goals. With this in mind, we need a mechanism to help us monitor our goals to make sure we are pursuing our most relevant goals at any given moment in time. One technique is to place goals in a matrix that looks at effort required versus perceived value of achieving the goal. Not always, but most of the time we will want to focus our energy on low-effort, high-value goals. Another technique is to use the Pareto principle, also known as the 80-20 rule. Ask, which are the 20% of goals that will provide me with 80% of my return? The last thing we want to make sure is that goals are time-bound. By including a specific date by which a goal should be accomplished, it helps provide incentive and allows us to monitor progress. Consider the difference between the goal to lose 10 pounds and the goal to lose 10 pounds in 10 weeks. Simply by including an element of time, we can now calculate how much we should be losing each week, and if after 5 weeks we have only lost 1 pound, we can revisit our action plan. Be wary of any goal that is open-ended, such as the common goal to learn a foreign language. Last, it is important to reinforce that goal setting is not an event. It is an ongoing process of action, evaluation, and revision. It is not about lowering goals or standards to ensure success. It is about recognizing goals are dynamic because life is dynamic. We do not live in a static world. Life happens. A goal that is relevant today may be irrelevant tomorrow. When using SMART, stay flexible and motivated by setting aside time to reevaluate your goals on a regular basis. Change is the only constant, and all of us need to change. So, as we all saw in the video, that goals have to be smart, and it's only when you start making smart goals will you visit your lesson plans, and will you revisit your lesson plans and understand कि आप modify क्या करोगे अपने lesson plans में, ताकि आप अपना करिकुलम भी सही से कर सके, पढ़ा सके बच्चों को, इफेक्टिव ट्रांजैक्शन ऑफ द करिकुलम हो जाए, और पढ़ाते पढ़ाते आपको भी मज़ा आए, बच्चों को भी मज़ा आए, और एक लर्निंग हो, एक ट्रांसफॉर्म्ड लर्निंग. So smart goals, why do we need smart goals? They will engage teachers and students in accomplishing tangible outcomes. जो learning outcomes हैं वो दिखने लगेंगे आपको बच्चों में, अगर आपने smart goals से उनकी पढ़ाई करवाई है. उनका progress भी आप measure कर पाओगे, आप priorities बना पाओगे, आप set कर पाओगे priorities, what is more important than the other. Focus for students and teachers will be set right because the goals are smart. They have to be measured, specific, measured, achievable, relevant, and time bound. So you have to be focused on your goal, and the decisions will have to be taken very, very timely. Therefore, you need smart goals. The purpose of setting SMART goals moves from actions and practices which are articulated and fine-tuned. New innovations introduced. बहुत से शिक्षक मैं समझती हूँ मुजफ्फरपुर से भी स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर बन चुके होंगे अब तक, या बनने की तैयारी में होंगे. तो इनोवेशन आप अपने तक सीमित नहीं रखोगे, स्टूडेंट्स में भी डालोगे इनोवेटिव आइडियाज, उनकी अच्छी प्रैक्टिसेस को नर्चर करोगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक दूसरे के साथ शेयर करोगे. स्टूडेंट लर्निंग इज सस्टेन्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड टू एंश्योर कंटिन्यूअस स्कूल इम्प्रूवमेंट. सो हाउ आर यू गोइंग टू डेवलप स्मार्ट गोल्स? You will participate with stakeholders, you will dig deep and be specific, identify critical goals, develop SMART goals in the light of vision and shared vision.
आपकी स्कूल का जो एक विजन होता है, जैसे पैडलेट पर किसी ने लिखा था कि हम अपने स्कूल को बेस्ट कम्युनिकेटिव स्कूल बनाएंगे, तो ये तो स्कूल का विजन हो गया, स्मार्ट गोल नहीं हुआ। पर आपका जो स्मार्ट गोल होगा, इस विजन के को ध्यान में रखकर अपने आप एक गोल बनेगा जो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड रहेगा। So align the school's smart goals with that of the goals given by the Directorate of Education of the state, CBSE, to bring synergy. Break down the goals into doable action points with clear timelines. जैसे आज हमें पता है कि आज मार्च खत्म होने को आ रहा है, तो हमें अभी सपोज अगस्त में स्कूल का एनुअल डे करना है प्लान, तो अभी से हम प्लानिंग स्टेजेस पर रहेंगे कि एनुअल फंक्शन रखेंगे, उसमें कौन सी आइटम रखेंगे, डांस, ड्रामा, स्टोरी टेलिंग, फिलर्स, नाटक, कविता, कवि सम्मेलन, क्या रखेंगे उसमें हम प्राइज विनर्स को सम्मानित करेंगे, कितनों को करेंगे, एक एक क्लास से करेंगे या ओवरऑल स्कूल के प्राइज विनर्स को सम्मानित करेंगे, हम माता पिता को बुलाएंगे, कहाँ बैठाएंगे, कोविड प्रोटोकॉल कैसे फॉलो करेंगे। तो हम इनको छोटे छोटे एक्शन पॉइंट्स में, डूएबल एक्शन पॉइंट्स में सेट करते हैं। स्टाफ मीटिंग्स लेते हैं, तो स्टाफ मीटिंग्स में भी पूरा स्टाफ इस चीज़ को डिस्कस करेगा, छोटे छोटे पॉइंट में उसको ब्रेकअप करेगा। फिर जो आपका प्लान बनता है उसको भी हम डिवाइड करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। जैसे बोलेंगे आप कि 10th स्टैंडर्ड के बच्चे डांस करेंगे, तो 10th के टीचर्स में से जो टीचर्स डांस में करवा सकते हैं बच्चों को, उनको आप डांस में असाइन करोगे। देन देयर विल बी समबडी फॉर अ रोल प्ले और अ ड्रामा, तो जैसे 15-20 मिनट का ड्रामा बन रहा है, तो आप डिसाइड करोगे कि कौन से लैंग्वेज टीचर्स के साथ कौन से बच्चे और कौन से दूसरे टीचर्स साथ दे सकते हैं, प्रॉप्स कौन से टीचर बनाएंगे, आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, उनका रोल क्या रहेगा, और कितने समय में क्या क्या काम होना है, प्रैक्टिस कब से शुरू होगी, स्कूल में 0 पीरियड कब से बनाया जाएगा, कितने मिनट का बनाया जाएगा, हम क्या कर सकते हैं। तो ये सारे प्लान हम पहले बनाएंगे गोल सेट करके, और ये गोल हमें स्मार्ट सेट करने, टाइम बाउंड। हमें पता है कि 14 अगस्त को हमारा एनुअल डे है, तो इट इज टाइम बाउंड, यानी 10 अगस्त तक तो पूरा सेट हो जाना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए। और 10 अगस्त से 12 अगस्त हम ड्रेस रिहर्सल करेंगे, 13 अगस्त को हम ऑडिटोरियम में उसका रिहर्सल करेंगे, जो बच्चे देखेंगे, 14 अगस्त को पेरेंट्स देखेंगे, तब जाके हमारा पूरा सिस्टम सेट रहेगा। और ये पूरी चीज को एक SOP के रूप में हम डॉक्यूमेंट करेंगे। जैसे ही हम उसको डॉक्यूमेंट करते हैं तो हमें दिखता है कि गैप कहाँ गिरा, हमने ये सोचा था, हमने ये किया। सोचने में, कथनी और करनी में जो अंतर होता है, वो गैप को हमें ब्रिज करना है। उस गैप को हम कैसे ब्रिज करेंगे, ये भी हम साथ साथ में सोचकर, ब्रिज कर कर, मॉडिफाई करके अपने प्लान को आगे बढ़ेंगे। तो जब हम स्मार्ट गोल लिखने बैठते हैं तो बिल्कुल ये सोचना है कि बी स्पेसिफिक, आपको अकम्प्लिश क्या करना है, तो बड़े स्पेसिफिकली उस चीज को ही अकम्प्लिश कीजिए। मेजरेबल, हाउ विल यू नो व्हेन यू हैव रीच्ड द गोल, आपको कैसे पता चला कि गोल आपने मीट कर लिया। इज द अचीविंग दिस गोल रियलिस्टिक विद एफर्ट एंड कमिटमेंट, क्या ये थोड़ी सी एफर्ट डालने से रियलिस्टिकली अचीव हो सकता है। अभी बोर्ड एग्जाम का समय आ रहा है, सब शिक्षक बोलते हैं कि हमारे स्टूडेंट बस 100 में से 100 लाए बस, और हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो क्या ये सही बात है
क्या ये रियलिस्टिक है? अगर हर बच्चा 100 में से 100 पूरे नंबर लाने लग गया तो क्या बोर्ड एग्जाम की वैल्यू रही? तो चीटिंग हो गई। रेलेवेंस में क्या आया? अ गोल नीड्स टू अलाइन विथ योर स्कूल्स ऑब्जेक्टिव। स्कूल के ऑब्जेक्टिव के साथ फ्रेम। और a smart goal must answer the 5 W's. Who is involved? What do I want to accomplish? Where will the action take place? When will the goal be achieved? And why is this goal important? अगर ये who, what, when, where, how, why इतने प्रश्नों का उत्तर आपके पास मिल जाता है तो for sure आप स्मार्ट गोल स्मार्ट बना पाओगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स से, कुछ दृष्टांत से इस बात को समझने का प्रयत्न करते हैं। स्टूडेंट्स विल डू बेटर इन मैथमेटिक्स, ये एक गोल है। इज इट स्पेसिफिक? नो। इज इट मेजरेबल? सी इट इज नॉट स्पेसिफिक बिकॉज हमने बताया नहीं कि कौन से स्टूडेंट्स बेटर करेंगे। इज इट मेजरेबल? हमने टाइमलाइन ही नहीं डाली उसमें कि कब तक बेटर करेंगे। इज इट अटेनेबल? आप किस चीज को देख रहे हो? बेटर मतलब कितना, अब कहाँ है, कहाँ पहुंचेंगे। इज इट अटेनेबल? नो। इज इट रेलेवेंट? यस, आज बच्चे अच्छा कर रहे हैं, कल भी करेंगे। So is it relevant? Yes. But is it time bound? Is it time bound? And the answer is no. It is not time bound. So when it comes to writing SMART goals, now in the chat box you are going to write convert this goal into a SMART goal for me. ये जो हमने आपको पिछले स्लाइड में बताया था, स्टूडेंट्स विल डू बेटर इन मैथमेटिक्स, इसको हमने स्मार्ट बनाने की कोशिश की है। दिस ईयर एवरी स्टूडेंट विल स्कोर बेटर इन मैथमेटिक्स, एक ऐसा गोल बनाया। इसको यदि हम स्मार्ट बनाते हैं तो ड्यूरिंग द ईयर 2021 और 21-22 all students of grade 10, यानी हमने उसको स्पेसिफाई कर दिया, all students of grade 10 will improve their score in CBSE examination, absolute specific, by 10%, measurable, enhancing conceptual understanding and problem solving in mathematics। और टाइमलाइन डाल दी है CBSE एग्जामिनेशन 2021। तो मेजरेबल है, रेलेवेंट है, स्पेसिफिक है, टाइम बाउंड है, रियलिस्टिक है, अटेनेबल है। Now this goal specifies who is involved, what is accomplished, and answers the W questions. Measuring criteria, CBSE result. Important and achievable objective has been explained as the outcome. Relevant and realistic for any school and it is time bound. अब chat box में आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस गोल को, is this a smart goal? Gen Next International School decides to improve writing skills in all students. Is this an example of a smart goal? Yes या no लिखना है। So Shashi Bhushan ji says no. Neetu Kumari no. Prem Shankar Singh says yes.
Ranjit Prasad, yes. And some say yes, some say no. Is this a SMART goal? Is this specific, measurable, achievable, relevant, time bound? All right. So the answer is no, this is not. It is not specific. Because Gen Next International School decides to improve writing skills in all students. All students में कहाँ से होगा? Let us check. The goal is for students, but no specific given with age, class, or in terms of grade. Which students, which standard, which subject. Very general, no criteria for measuring progress. Motivational aspect given, but no clear plan कि हम कैसे motivate करेंगे, कौन सी skills, कौन सी competencies develop करेंगे. Relevant, good writing skill is necessary for students, but no target date, no deadline, कब तक करेंगे. इसी सेंटेंस को यदि स्मार्ट गोल में हम कन्वर्ट करने जाते हैं तो Gen Next International School decides to improve writing skills of students of classes 6, 7 and 8 in English before the commencement of the mid-term examination with specific focus on creative writing. यानी हमने उसको इतना सारा स्पेसिफिक बना दिया कि क्लास 6, 7, 8 के बच्चे focus on creative writing. English will be the subject. Mid-term exam यानी PA1 या यूनिट टेस्ट जो भी आपकी स्कूल में हो रहा है उसके पहले बच्चों की राइटिंग स्किल्स में हम इम्प्रूवमेंट लाएंगे. यानी हमने 2 महीने का समय दिया है जेन नेक्स्ट इंटरनेशनल स्कूल ने अपनी पूरी मिडिल स्कूल के बच्चों को इंग्लिश राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए. तो उन्होंने टाइम बाउंड भी कर दिया, रेलेवेंट, स्पेसिफिक, अटेनेबल, मेजरेबल सब बता दिया. अब इसको आप बताइए, इज दिस एन एग्जाम्पल ऑफ स्मार्ट गोल? चैट बॉक्स में लिखते जाइए. चैट बॉक्स थोड़ा स्लो चल रहा है. शशि भूषण जी, आपको मुझे बताना है कि ये स्मार्ट गोल क्यों है. अगर आप नो लिखते हो तो भी क्यों है, व्हाई इज इट नॉट, एंड इफ यू से यस, व्हाई इज इट. Little Heart School organizes training session on examination and assessment strategies for its middle wing teachers. ये हमें समझने और सीखने की चीज है. In fact, this is one thing we don't easily give in training programs. आप यदि यस लिख रहे हो तो आपको मुझे समझाना है चैट में कि आप क्यों इसे यस कह रहे हो. अगर आप नो कह रहे हो तो आप क्यों नो कह रहे हो. The true learning of the teachers is only through understanding, interaction. It is relevant to the student specific within the time limit. मुझे यदि पूछा जाए तो it is not specific. It is categorized for teachers, middle wing teachers. Okay. Organizes training session on assessment strategies. Now let's check. This goal specifies the who and why.
does not give any concrete criteria for measuring progress. There is no progress measurement. Target is achievable as training session can be organized as a part of professional development program of the school. So it's an achievable target. It is relevant for middle wing teachers in terms of priority. And it is time bound to an extent, but it's not meeting the criterion for SMART goal. यदि उसको SMART goal बनाना होता तो Little Heart School launches a year-long capacity building training program consisting of 3 learning modules for its teachers to upskill themselves on innovative teaching learning practices, followed by practical demonstrations by teachers after each module. यानी हम जो अभी 25 घंटे कर रहे हैं इन-हाउस ट्रेनिंग के, शायद हम ये भी बोल सकते थे मुजफ्फरपुर सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स launches a year-long capacity building program in 3 modules for its teachers to upskill them on innovative teaching learning practices. पर यहाँ तक रुक कर नहीं, उसको हम कैसे देखेंगे? टीचर्स प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देंगे आफ्टर ईच मॉड्यूल. जब टीचर्स प्रैक्टिकल देंगे तभी तो पता चलेगा कि उनको कितना समझ में आया. मेजर करने की एक तो ये है. हम टीचर्स की टेस्ट कैसे लेंगे? प्रैक्टिकली आप क्लास में करके दिखाइए आपने क्या सीखा. तो अभी ये आपका टास्क है. यदि आप इन गोल्स को स्मार्ट गोल्स में कन्वर्ट करोगे तभी आपको मुजफ्फरपुर सहोदय सर्टिफिकेट देगा आज के लिए. चैट बॉक्स में आई वांट टू सी ऑल द पार्टिसिपेंट्स राइट स्मार्ट गोल्स. सुधीर सर, आप मुफ्त में सर्टिफिकेट इस बार मत बांटिए. जब तक पूरे 295 पार्टिसिपेंट्स अपना चैट बॉक्स ऑन करके इस गोल को स्मार्ट नहीं बनाते, उनको सर्टिफिकेट मत दीजिए आज. स्टूडेंट्स विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंटली इन सेकेंड लैंग्वेज. इसको स्मार्ट बनाइए. यूज द चैट बॉक्स. ये गोल स्मार्ट नहीं है, ये ऑर्डिनरी गोल है. इसमें यस नो नहीं लिखना है, इसमें सेंटेंस बदलकर स्मार्ट सेंटेंस देना है. It is specific but not time bound. Which students will be able to speak ये नहीं बताया है. So all students of grade 2, अगर इस चीज को हमें स्मार्ट गोल बनाना होता, इस वाले वाक्य को यदि स्मार्ट गोल में कन्वर्ट करना होता, वेरी गुड ट्राई. मैं बताती हूँ ये एक वेरी गुड ट्राई किसकी थी, मैं चैट ऑन करके बताती हूँ. किसी ने बड़ा अच्छा लिखा था, प्रभात कुमार झा. वेरी वेल रिटन. Every student should be able to speak fluently in second language within 2 months. Manish Kumar ji also very well written. All students of class 8 to 12 will be able to speak in the second language in the period of 3 months starting from 1st April 2022. Very well spoken.
So when we move ahead, like I am showing you, all students of grade 2 will be able to speak in the second language by the end of midterm of the current session, which will be assessed through their classroom observation and orals in the form of story, narration, role play, etc. तो आप उसको मेजर कैसे करोगे, ये आप दोनों ने नहीं लिखा था, तो मेजर करेंगे क्लासरूम ऑब्जर्वेशन से. उनकी टेस्ट लेंगे, ओरल टेस्ट, असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स. वेरी गुड विनीता शर्मा. स्टोरी, नरेशन, रोल प्ले, इन सब से हम इनकी टेस्ट लेंगे. So here we have all teachers, ये एक दूसरा गोल दे रही हूँ मैं आपको सेट करने के लिए, will be able to use at least 2 digital tools during the teaching learning process. ये मैं पैडलेट पेन आपको खोल देती हूँ, आप वहीं लिखिए, आपका समय बच जाएगा. All teachers will be just give me a moment, ये थोड़ा अटका हुआ है. अगर मैं इसी को यहाँ शेयर कर दूँ तो क्या होगा? All teachers, you can use the chat box only. All teachers will be able to know how to use at least 2 digital tools during the teaching learning process. Use the chat box please, because something's wrong on the Padlet. आपको गोल स्मार्ट करना है. All those of you who like writing on the Padlet, I'll open the Padlet for you. I'll share the Padlet link also, not an issue. क्लासरूम के माहौल को स्मार्ट बनाएंगे. प्रैक्टिस एवरी डे, स्टार्ट कॉमन वर्ड्स, ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड इन देयर ओन लैंग्वेज. All those of you who found the Padlet interesting can use the plus sign on the Padlet link. So students will be able to speak if they practice every day. I can see some people writing on the Padlet. I'm very happy.
आप लोग जो चैट बॉक्स में लिख रहे हैं वो स्मार्ट गोल नहीं है, आपको गोल स्मार्ट बनाना है। गोल स्मार्ट तभी होता है जब वो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड हो। करीबन 10 व्यक्ति, 10 टीचर्स पैडलेट पर है अभी भी। The chat in the chat box on WebEx is also moving, and so is the Padlet. Very good, Babita Jha. All right, so I will now reshare my screen. And let us see, all teachers of Gen Next School will be able to use at least 2 digital tools during the online teaching learning before August 21. And the same will be demonstrated by teachers in micro-teaching sessions scheduled in the last week of September 2021 or now 2022. So think like a teacher or a resident educator, and if you're a principal, think like what you are and create a SMART goal for your school. So I have given you examples, I have given you what a meaning of a SMART goal is. So at your designation, आप टीचर हैं तो टीचर, एडुकेटर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, आप जो भी हो उस पोजीशन से मैनेजर ऑफ अ स्कूल अपने स्कूल के लिए स्मार्ट गोल बनाइए। पैडलेट लिंक अभी भी खुली है, आप ही के पास पड़ी है पैडलेट लिंक चैट बॉक्स में, उसी पर आप अपने स्कूल के लिए स्मार्ट गोल बनाइए। So I can see people writing, all teachers have to learn Zoom and WebEx with the use of writing pad during summer vacation in the month of June, and it will be assessed through online classes. Congratulations to you for writing this. All teachers will be able to use at least 2 digital tools till the last end of this month. Why not? So some of you who are setting a SMART goal for your school, I can see people on digital board and e-Pathshala, activities, role plays, presentations, storytellings have come up. Come on. I am very happy with some of you who've done a brilliant job. मुझे तो अब पता चला कि आप लोगों में इतना हुनर है। आप ऐसा वर्कशीट भी बना सकते हो कि इनिशियल गोल आपके माइंड में जो हो, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर भी ट्राई कर सकते हो। इनिशियल गोल आपके माइंड में एक होगा, उसको आप स्पेसिफिक कैसे बनाओगे, उसके ये पैरामीटर्स दिए गए हैं। एक स्क्रीनशॉट रखिएगा, आपको बाद में भी काम आ सकता है। यस अंतिमा मिश्रा जी। So you have to not only create SMART goals, but you have to monitor them, evaluate them. So think of the systems to ensure
that smart goals have been developed and are monitored effectively. When designing the system, you could consider who will be responsible for monitoring and evaluating the set goals. अब जैसे प्रिंसिपल है तो हर चीज तो प्रिंसिपल नहीं कर पाएगा, प्रिंसिपल भी किसी ना किसी को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा. हाउ ऑफन वुड द गोल बी असेस्ड, कितनी बार हम इस गोल को देखेंगे. हाउ ऑफन विल द स्कूल एनालाइज रीजंस फॉर नॉन अकम्प्लिशमेंट, यदि नहीं मीट किया गोल तो स्कूल इसको कितनी बार जांचेगा, मॉडिफाई करेगा, एनालाइज करेगा. एंड हाउ विल यू रीफ्रेम द गोल to reach the timely completion of the goal next time. ये सारी चीजें हमें करनी होती. और आज आपको होमवर्क भी मैं दे रही हूँ कि आप अपने स्कूल को बेहतर बनाने के लिए एक स्मार्ट गोल बनाइए. आप स्कूल गोल लिखिए, इस नीचे वाले चार्ट का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. एक स्कूल गोल लिखिए, एक गोल आप जिस डेजिग्नेशन में हैं उसके लिए लिखिए. उसके हिसाब से आपके स्टूडेंट का एक स्मार्ट गोल क्या होगा और पेरेंट्स जो आपके सेशन आपके क्लासेस में हैं बच्चों के, उनके स्मार्ट गोल्स इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020, नई शिक्षा नीति को मद्देनजर रखते हुए आप स्कूल के लिए एक स्मार्ट गोल बनाएंगे. जिस डेजिग्नेशन में आप हैं उस डेजिग्नेशन से आप गोल बनाएंगे. यदि आप प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, वाइस प्रिंसिपल ऐसे कोई पोजीशन पे हो तो आप टीचर गोल भी बनाएंगे, लीडरशिप गोल एंड टीचर गोल. यदि आप केवल शिक्षक हैं तो आप लीडरशिप गोल ना बनाएं तो चल सकता है, पर यह आपका होमवर्क है. इस सेशन की सफलता उसी में है कि आप ना ही पार्टिसिपेट करें और सीखें, पर उसको अपनी स्कूल में ले जाकर अप्लाई करें. और जब हम ऐसे स्मार्ट गोल्स बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, आपको अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज में भी ये चेंज दिखेगा. तो आज बिफोर वी एंड टुडेज सेशन, I would obviously like to thank the Muzaffarpur Sahodai School Complex for inviting me to this platform amongst you people. I would love to thank Shri Tarun Kumar Sir, Deputy Secretary and Head CBSE Center of Excellence, Patna, for connecting us. Dr. Sudhir Kumar Singh ji, who's been with us for almost all the sessions that I've had with you. And it goes without saying, Chandan sir, who's behind the scenes, connecting us together, running WebEx so effectively. Your attendance link, I think, has been given to you. I would love you to share your takeaway from today's session in the chat box. आज आप इस सेशन से अपने पास क्या लेकर जा रहे हो, वो मुझे चैट बॉक्स में जानना है. तो वहाँ केवल थैंक यू ना लिखें और साथ में कुछ और भी लिखते जाएं. जैसे बबीता झा मैम ने लिखा है, वी मस्ट हैव एक्स्ट्रा चैलेंजिंग कोर्सेज. तो यदि ये कोर्स आपको चैलेंज कर पाया तो आई एम ग्लैड. Prabhat Kumar ji, was the course challenging enough for you today? Or you want a greater challenge? Okay, so Prabhat Kumar ji is quite satisfied. उनके लिए ये कोर्स भी काफी चैलेंजिंग था. आने वाले 4 दिन, आज से लेकर 31 तारीख तक मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के साथ हूँ. देखते हैं हम कितना चैलेंज कर पाते हैं.
Yes. मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप बताते हो कि आपको आज का सेशन पसंद आया, पर कितना पसंद आया ये जब आप रिफ्लेक्शन से मुझे बताओगे। आप अपने रिफ्लेक्शंस आज के सेशन के बारे में सुधीर कुमार सर को भेज सकते हैं, मुझसे वो शेयर कर देंगे। थैंक यू फॉर अ वंडरफुल फीडबैक। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों को बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया, आपको मोटिवेशन मिला। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। Yes, Anwar Alam Khan ji, absolutely bang on correct. चंदन जी लिंक डाल दें। लिंक डाला हुआ है, फिर दोबारा डाल दे रहे हैं। Shashi Bhushan ji, I'm glad you found it interesting. वंदना मिश्रा जी, आई एम वेरी हैप्पी, आपको ये सेशन यूनिक लगा, कुछ नया। हर बार मैं आपको, आप सभी को इनफैक्ट हर बार हर सेशन में कुछ भी नया देने की पूरी कोशिश करती हूँ। इनफैक्ट इन 4 दिनों के टॉपिक्स सोचने के लिए भी डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी नए टॉपिक्स हमने इस हफ्ते के लिए चुने हैं। So thank you, Sudhir Kumar sir, for the opportunity to come up with these new topics. थैंक यू मैम। आप लोगों का फीडबैक बड़ा अच्छा आ रहा है। आई होप कि साथ में आप लोग जो भी आपकी अटेंडेंस लिंक में भर रहे हो वो इससे मैच करता होगा। आज मैंने आप लोगों से जो बातें करी है, जो आपको होमवर्क दिया है, यदि आप उतना करेंगे तो आप अपने आप में भी एक शिक्षक के रूप में बड़ा अंतर पाएंगे। Do practice what I have preached today. Thank you so much, sir. With your kind permission, I would like to exit. Juhi Kumari ji, thank you so much. आपने बड़ी अच्छी बात लिखी है। So thank you very much, everyone. With your kind permission, I would love to exit today's session. See you all tomorrow sharp at 4 p.m. Namaskar. थैंक यू मैम, नमस्कार।